ऑल इंडिया किसान सभा, इसमें आई सेड दैट मिस्टर कांग्रेस एंड देन खिलाफत, सो मैनी एवरीवन हैज़ बीन देयर, लेकिन आई सेड दैट इसके बाद भी इसमें देखा जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती and then N.G. Ranga was the major portion who has played an important role. सहजानंद सरस्वती, ऑल इंडिया किसान। तो हमारे इंडिया के सारे जो किसान हैं बहुत ही हर चीज़ को सहज में लेते हैं, सहजानंद, यस। और होली में रंग जरूर खेलते हैं, यूपी या ऑल इंडिया किसान जो है सारे किसान, और डेली रंग खेलते हैं। कभी होता है जब किचन में चले गए होली हो गया, सहज ही रंग खेलते हैं ऑल इंडिया किसान, Sahajanand Saraswati, and then I said that Ranga, N.G. Ranga. So I am going to say that which are the important leaders if I am talked about. I talked about first one, हमने क्या बोला, 1859, and it is an Indigo Revolt. And you remember that Indigo Revolt, 1859. I said Indigo Revolt, and this revolt is in the Bengal, and it is what, Digambar Vishwas. And then which Vishwas? Vishnu Vishwas. 1870. And 1870, you know that Pabna, and then Pabna movement, ध्यान से Pabna movement. And 1870 गुस्से में पब में कौन कौन पहुंचा था? ईश्वर, ईशान चंद्र रॉय, and thereafter शंभूपाल और मुल्ला, खुदी मुल्ला. Understood? Pabna movement. And these two are in which region? These two are it is in the West Bengal and it is in the East Bengal. 1875, if I am talking about, you know that आपको Deccan riots, Deccan riots, और ये कहाँ हुआ था? In the Pune and Ahmednagar, Mesar, and all the farmers are there. Thereafter I talked about in 1879, और हमने इसके लिए क्या बोला था? क्या बोला था? कहाँ पर? कप में क्या था? राम जी का चित्र था. And this is a Ramoshi, and this is a Chittur Singh, and then yes, वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के. 1930 भी से विल एंड बी से बिजोलिया, यस. एंड हमने बोला टॉमी बिजली की तरह बिजोलिया. टॉमी बिजली की तरह किसके पीछे था? साधु के पीछे. साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, और उसको क्या बना दिया? भूप सिंह. और भूप से मुझे क्या मिल सकता है? बहुत सारे मनी. मानिक लाल. Understood? In 1970, you know that it is in a Champaran Satyagraha, and that is Gandhi, and who called upon? Rajkumar Shukla. 1918, and all of you know that it is in which Satyagraha? Kheda Satyagraha. And the Kheda Satyagraha, who was there? Yes, Kheda Satyagraha में कौन थे? मदन मोहनलाल पांड्या, मोहनलाल पांड्या, गांधी. एंड गांधी का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किसने देखा था? वल्लभ भाई पटेल हैज सीन द एक्सपेरिमेंट ऑफ इट. वल्लभ भाई पटेल. एंड अनदर आई सेड दैट कौन थे साथ में? महादेव देसाई. महादेव देसाई. 1921 in the Malabar coast, which movement is there? Mopila, और मापिला भी लोग कहते हैं. And that is, I said that who is there? Ali Mushaliyar. And Ali Mushaliyar, and thereafter I talked about Ali Mushaliyar के बाद हमने क्या देखा था? कुआ
Ahmed ji. 1928 Bardoli, and in the Bardoli Vallabh Bhai Patel. Understood it? And यूपी के किसान सभा को मैंने क्या बोला था? That is in the Awadh. Yes, क्या था? Which person is there? Yes? गौरी शंकर मिश्रा. एंड इन्होंने क्या भेजा और किससे इसकी पूजा की? उसके बाद इंद्र नारायण द्विवेदी. फिर किसकी पूजा की? मदन मोहन मालवीय. 1921 it is I said that Eka movement, and in Eka movement I said that Congress, Khilafat and then Madari Pasi. I said that इसमें सारे एक हो गए. कांग्रेस, Eka movement, कांग्रेस, Khilafat and then I said that Madari Pasi all become together. Understood? And I talked about ऑल इंडिया के किसान कैसे होते हैं? सहज ही रंग खेलते हैं. सहजानंद ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, और सहजानंद सरस्वती, एंड ये लिखते हैं एनजी रांगा. और आई टॉक्ड अबाउट एनजी रांगा. इंडिगो रिवोल्ट, कैसा रिवोल्ट था? विच काइंड ऑफ रिवोल्ट? It is against the exaction, increase in the tax. Yes or not? It is against the exaction. It is in a or suppression, British rule suppression and exaction. तो सब जगह इनका दबाव ही हो रहा था. Understood? Pabna related to tax. Deccan revolt, it is related to money lenders. It is money lenders. Understood? And Ramoshi, it is again land revenue ejection, tax ejection, tax increase किया गया, land revenue. And Bizolia, what is in the Bizolia? कहाँ पे Bizolia था? Bizolia कहाँ पे? जहाँ पे भील है, राजस्थान. And in that one उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से तो वो ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, exaction. It is again against the exaction. चंपारण सत्याग्रह, and चंपारण सत्याग्रह में सब कुछ था, ब्रिटिश रूल सप्रेशन, and I said that सप्रेशन भी कर रहे थे, and then they are also putting more taxes on that. तो यहाँ पे मेजर ब्रिटिश रूल सप्रेशन. खेड़ा मूवमेंट, क्रॉप फेल्यूर, और खेड़ा मूवमेंट में हमने बोला था दैट इज एन आई सेड वन रेवेन्यू कोड. खेड़ा मूवमेंट आई सेड दैट ब्रिटिश सप्रेशन एंड खेड़ा मूवमेंट में हमने क्या देखा? जस्ट टेल मी फास्ट. हाँ, क्रॉप फेल्यूर 1921 में अगेंस्ट द जमींदार, 1928 में टैक्स इंक्रीज बारदोली. क्योंकि कुछ वर्ड याद रखेंगे देन यू कैन बी एबल टू राइट फ्यू वर्ड्स इफ यू आर रिमेम्बरिंग. This way it can be made easy. In the social religious reform movement and other tribal movements you can't remember one word because they are fighting for the different conditions are there. लेकिन यहाँ पर भी simple है. Somewhere I said that zamindari, somewhere I said that tax structure, somewhere I said that exactions, somewhere I said that crop failure, famine. Understood? And then British separation you can be able to see.
Understood it? So we are going to see, so which are the movement, peasant movements important we have to see. 1859, yes, Indigo Revolt. 1870, Pabna. 1875, Deccan Riots. And 1879, Ramosis. 1913, Bizolia. 1917, Champaran Satyagraha. 1918, Kheda Satyagraha. 1921, Mopila. And 1928, Bardoli. Thereafter again 18, 21, 36. UP Kisan Sabha. UP Kisan Sabha. Yes, 1918. And then 1921, Ekka movement. And then 1936, I said that All India Kisan Sabha. Understood? So first one we will see, like I said, that Digambar Biswas and Vishnu Biswas were the leader of Indigo Revolt, which has been added later on. लेकिन यहाँ पे था इंडिगो रिवोल्ट ऑफ बंगाल वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश प्लांटर्स. एक फैक्टर आपको मैंने बोला था ब्रिटिश प्लांटर्स, तो ब्रिटिश प्लांटर्स एंड जमींदार. एंड देन आई सेड दैट ब्रिटिश प्लांटर्स हु फोर्स्ड पीसेंट्स टू टेक एन एडवांटेज. तो ये दो मूवमेंट थे ब्रिटिश प्लांटर के. विच आर द टू मूवमेंट्स? इंडिगो रिवोल्ट एंड चंपारण सत्याग्रह. I said that Indigo Revolt of Bengal was directed against the British planter who forced peasants to take advantage and then sign fraudulent contracts which forced the peasants to grow indigo under terms which were the last profitable to them, which at least profitable to them. तो simple है, जैसे हमने को देखा ये simple वो land पे करवाना चाहते थे indigo, because in the cotton textile industry there is a high need of what I said that indigo. So there is a separation is there by the British planters to what is going to grow this one. Understood? At least some land, and they are paying less, and they are paying less. और उसके पहले वो contract fraudulent contract लोगों से sign and अंगूठा they have to take. In Nadia district, अब nearby I said that Kolkata there is a Nadia district. Which district? In Nadia district in 1859 in Bengal, that I said that in the West Bengal, Digambar Biswas and Vishnu Biswas who organized the peasants into a counter force. क्योंकि जनरली ब्रिटिश प्लांटर्स के पास क्या था, उनके पास लाठी लीवे बंधे हुए होते थे, उनको कहा जाता था प्लांटर लठियाल्स. सो उन प्लांटर लठियाल्स के अगेंस्ट एंड ब्रिटिश प्लांटर्स के अगेंस्ट दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास हैज क्रिएटेड एन फोर्स टू फाइट अगेंस्ट देम, एंड देयर आफ्टर द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1859. नॉट ओनली इन द आई सेड दैट नादिया, कोलकाता, देन पबना, several district, and then several district has been become the part of it, and then finally I said that they completely all the cultivators they refused to what is grow indigo. Understood? And the revolt enjoyed the support of all categories of rural population, missionaries and Bengal intelligentsia. Understood it? This is the इंडिगो रिवॉल्ट. लेकिन इस इंडिगो रिवॉल्ट की वजह से एक चीज ये हुआ that the farmers in the other region, Pabna people are also involved into it. The Pabna revolt वहाँ पे there is an I said that Britishers के लिए exhaustion जमींदारी and all, I said that उनका oppress किया जाता था जमींदारी के द्वारा, that they have revolted against. Understood? तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि British planters who I said that British planter in 1859 they are doing what is in a separation, and then they are making the forcefully to grow indigo in a part of a land, and that has been I said that through the fraudulent contracts they have made it. So Digambar Biswas and which one I said that Vishnu Biswas, these are the two important leaders. They get together and they said they get together with the lots of force against the planter Latials. In this movement everyone from the what I said that nearby district Barsat, Nadia, तो already था ही, Pabna, everyone get involved, and then they fight against it, and finally Christian missionaries and every kind of what is in a society get added with this, and they refuse to grow indigo. Now we are able to see, I said that which movement I said? Pabna movement. In the Pabna movement you know that हमने क्या देखा था? Ishan Chandra Roy, Ishwar, and then Shambhu Pal, another I said that K. Mulla, Khudi Mulla. And then I said that in the East Bengal, peasantry was
ये किसके लिए था? सब जमींदारी. Peasantry was suppressed by the जमींदार through the frequent recourse to harassment, arbitrary enhancement of rent. मतलब कुछ भी करते थे, तुरंत रेंट बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, then they started facing problem. और कभी कभी उनका tenancy, उनकी tenancy that whether you will be the tenant of this land or not. The जमींदार who and then the enhancement of rent through seizes the books and use of force. और वो उनको बंद कर देते थे and all. उनके लैंड को सीज भी कर लेते थे एंड देन बंद कर देते थे. दैट इज नॉन एज अबॉप्स. द जमींदार आल्सो ट्राई टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द एक्वायरिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स अंडर द एक्ट ऑफ 1859. एक्ट बना था एक 1859 में कि उसके अगेंस्ट वो अपना ऑक्यूपेंसी दिखा सकते थे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे यूज्ड टू प्रेशराइज इट. इसीलिए ऑक्यूपेंसी राइट को लेकर बंगाल टेनेंसी, जिसको मैंने बोला था कि देयर इज एन दे हार्ड दे एम्फसाइज ओवर व्हिच वन आई सेड दैट ऑक्यूपेंसी इंस्टेड ऑफ टेनेंसी इन द बंगाल टेनेंसी एक्ट. In 1873, agrarian league बनाया गया by the some people that I said that was formed in the Yusuf Jahi Pargana of Pabna district. जरूरी नहीं है कि Yusuf Jahi आप याद रखें. In the Pabna district, some agrarian league in 1873 has been formed, and then payment of enhancement of rents refused peasants and the zamindars in the courts. और enhancement of rent and tenants को लेकर they called upon zamindars into the courts. So it is against the zamindari. और इसी तरीके से सिमिलर अग्रेरियन लीग हैज बीन फॉर्म्ड इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ व्हाट वेस्ट बंगाल इन द बंगाल. एंड दिस वे द ब्रिटिश गवर्नमेंट कम अंडर द प्रेशर एंड दे हैव गिवन एन ऑलरेडी इन द आई सेड दैट पीरियड ऑफ रिपन इट इज इन अ बंगाल टेनेंसी बिल which has been later on become Bengal Tenancy Act in 1885. Again I said that what is happening in the Bengal, I said that especially in the East Bengal, that the Britishers and then under the Britishers Jamindari system are there, and through the Jamindari system, Jamindars were suppressing the farmers. The enhancement of rent and then taxes and tenancy is also now fixed. So and then sometimes they seizes their land and then these people also. Therefore, I said that against this, I said that which are the people are there? Ishan Chandra Roy and then Khudi Mullah and then I said that Konsa Sambhupal, they have get together and they have made an what in the Pabna region make agrarian league, and with the help of agrarian league they call upon the Jamindar into the courts on the basis of Occupancy Right Act of what 1859. And thereafter this similar kind of agrarian league has been formed in the different districts, and then again they have been government come under the pressure and finally they have to give in a what Bengal Tenancy Act. Understood? So we have finished till this. Tomorrow we will finish rest of it, and thereafter we will go for different kind of, I said that 1857 revolution तो नहीं start होगा. There will be, I said that one day Anglo Mysore, Anglo Maratha, these are the things will start. Understood?